Bollywood reel versus real life. So first of all, we talk about for the news the types of people in the cinema theater. So is that on the one side there are single people like us who just go for and just watching the movies. अगर हम किसी अदर कंट्री की स्पाई यूनिवर्स की अगर हम हीरोइन को भी देख लें तो हम उसके लिए भी एक ही चीज कहते हैं, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हैं आप. और while other side the couples are trying to build up their own love story. चल चाय पिलाएंगे, मन्ने कॉफी पसंद है, गामा में लाइट कोई ना आती, तारियां की छांव पसंद है. और ये वही लोग होते हैं जो फिल्म देखने के बाद बोलते हैं फिल्म अच्छी नहीं थी मगर हमने गलती से अर्जुन कपूर की फिल्म के टिकट करा लिए थे. Now the second news for today is Bollywood reel versus real life. In the Bollywood, the actors are usually used to make their father for console. They are not just proving their profession, just follow their passion. That I don't want to fix machine. ये कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है. पापा मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ. I want to be photographer. ये छोटी गाड़ी होगी, कम पैसा होगा, और मैं खुश रहूँगा. While on the other side, we used to look our father be like. आज के बाद ये ख्वाब देखने की जो आप बात कही है उसको वो आगे बनाने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि बड़े भाई से पूछ लेना तेरे पापा की दी हुई मारी हुई कुटाई बड़ी कसाई नुमा होती है. अरे टेंशन क्यों ले रहा मेरा बच्चा, मैं हूं ना, बेटा लाओ चल तेरे को. सियासत में सिर्फ फैंटा नहीं चलती हैं, न्यूज़ की खबरें भी अच्छी होनी चाहिए. Now the third news for is viral trending songs of Bollywood. There are songs which come from the Dhurandhar Jazz that dropped from first line Didi Ula. So in that song Didi Ula background उछल के फायरिंग कर रहे थे हमजा के लिए, लेकिन भाई रहमान डकैत की आत्मा जब उठ के आई बोले मेरे लिए तो फायरिंग नहीं करती बल्कि मैंने तो 5 सेकंड के रील डांस भी करा था गोली बारूद लेने के लिए, और हमजा के लिए तुम लोगों ने इतनी ज्यादा कर ली कि उसकी वे भाई Good morning, I am Vansh with your business headlines. The IMF global growth to 3% दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल हमारे सेमेस्टर के मार्क्स ऐसी हो गई है, barely पास है. सेकेंड न्यूज़ है इंडिया की इकोनॉमी 6.4% पे अभी भी होल्ड कर रही है. बाकी कंट्रीज जहाँ टॉप कर रही हैं आज भी हमें डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम खत्म ना हो जाए. इन कॉर्पोरेट न्यूज नेस्ले के प्रॉफिट 27% जंप करे थैंक्स टू एमबीए स्टूडेंट जो स्ट्रेस ईटिंग नहीं संभाल पा रहे हैं. फाइनली इंडिया और वियतनाम अब नए बीएफएफ हो चुके हैं, बट ग्लोबली सर्जिंग डिफेंस हमारे ईएमआई जैसा हो गया है, बिल्कुल कभी भी ओवर स्पेंड हो सकता है. Good morning everyone. Fashion news. Trends that are turning heads. Fashion influencers are confidently walking around in outfits that looks like they borrowed clothes from their different decades, and somehow it works. Baggy cargos, tinny tops and chunky sneakers. मतलब अगर कपड़े सिर्फ अच्छे नहीं होने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होने चाहिए, वरना अर्थ बोलेगी आउट ऑफ फैशन बेटा. Invisible fashion became latest trend. In shocking twist, the fashion industry has introduced a new trend called invisible fashion designer. Claim it represents minimalism at its peak. Oversized fashion gets out of control. Oversized fashion has officially gone too far. People are now wearing t-shirts that could double as bedsheet and pants that looks like parachutes. आजकल कपड़े फिट नहीं होते, कपड़ों में लोग फिट हो जाते हैं. फ्रेंड, नाइस शर्ट. मी, थैंक्स, बट इट्स एक्चुअली अ कर्टेन. AI starts designing fashion, human nervous. Artificial intelligence has created a fashion world and is now designing outfit faster than humans. Designers are worried, but AI says, don't worry, I am just experimenting. At last, फैशन टुडे इज सिंपल. अगर समझ आ गया तो ओल्ड फैशन, अगर नहीं आया तो इट्स ट्रेंडिंग. थैंक यू. Inflation hits new heights. Good morning, everyone. In today's top economic news, inflation
has once again shows it loves height more than mountain climbers. Prices of daily essentials are rising so fast, even rockets are asking for the tips. Experts says people are now doing more calculations in grocery stores rather than in mathematics examination. News 2. Petrol prices and public relations. In other news, petrol prices has increased again and citizens have discovered a new talent, that is walking. Many bike owners are now checking petrol prices more frequently than their social media notifications. Economists call this the rise of think before you drive economy. Online shopping versus budget reality. Moving towards digital marketing, online shopping sales are booming like never before. People are adding items to their carts faster than companies are announcing bonuses. But at the payment stage, reality hits with inflation and suddenly the cart becomes lighter. Rupees versus dollar drama. And finally, in international economic news, the Indian rupee and the US dollar relationship continues to be dramatic. The rupee keeps trying to stay strong, and while the dollar keeps acting like a rude boss in a corporate. Meanwhile, travelers and students are going abroad and refreshing exchange rate apps more than their Instagram feeds. Economics says this drama has more suspense than daily soap operas. Thank you. Good morning, everyone. Now head towards the sport news, and the first news is IPL drama. Batman hits six so hard, ball applying for visa. Yesterday, thrilling match of IPL. A batsman smashed the ball in such a way that the ball crossed the stadium with and surpassed the two chai wala stalls and one uncle's afternoon snap. बताया जा रहा है कि मंगलू लेके हुआ बॉल फरार. मैच का फैसला हुआ आपसी समझौते से. Sport news 2. Unexpected goal. Goalkeeper saves ball and then forget that a match is still going on. During the friendly football match inspired by the style of English Premier League, a goalkeeper made a brilliant save, but then celebrating too early and forgot the match is still going on. अब पछताने से होगा क्या, चिड़िया चुप गई खेत, डांस करता रह गया गोलकीपर, बॉल रोकने में हो गई लेट. That's all for today's news, where the fact meets fun, headlines meet humor, and laugh is always a breaking news. This is your anchor signing off, reminding you all to save money, follow trends carefully, watch movies responsibly, and most importantly, keep smiling because laughter has no GST.